आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। समस्या दिल्ली में है। दो तीन चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है। क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकती। भारत, मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और उन लोगों को तो मैं जानता हूं, उन लोगों को तो मैं जानता हूं। This is something far more serious. Remember, all this time we've been saying that since 1975. Today, for the first time since 1975, reports suggest an Indian Army officer and 2 soldiers have been killed in Galwan Valley at line of actual control by Chinese forces. Reports also suggested Chinese army captured 60 square kilometers of our territory in Ladakh, while BJP was busy doing political rallies. The transgressions by Chinese forces are reported in Galwan River Valley, Hot Springs and Pangong So Lake area in Ladakh. But the Modi government has yet to address the nation on this extremely pressing issue. India has never in the past compromised with our national security and territorial integrity. And if the reports of killing of our brave officer and soldiers by the Chinese are indeed true, then Prime Minister and Raksha Mantri must come forward and answer. First, is it true that Chinese have killed an officer and soldiers of Indian Army in the Galwan Valley? Is it true that Indian soldiers have also been critically injured? If so, why are PM Modi and Defence Minister maintaining absolute silence? Second, is it true that Indian Army officers and soldiers were killed on June 15th night as the de-escalation process was underway in the Galwan Valley? Third, if our soldiers were killed on June 15th, why was the statement issued today at 12:52 p.m. and why was the statement changed after 16 minutes at 1:08 p.m.? Fourth, why is the PM and defense silent on Chinese intrusion into India? Fifth, how much Indian territory is being illegally occupied by China? Sixth, how does the government plan to tackle this situation and safeguard India's national security and territorial integrity? This is
something far more serious. Remember, all this time we've been saying that since 1975. Today, for the first time since 1975, reports suggest an Indian Army officer and 2 soldiers have been killed in Galwan Valley at line of actual control by Chinese forces. Reports also suggested Chinese army captured 60 square kilometer of our territory in Ladakh while BJP was busy doing political rallies. The transgressions by Chinese forces are reported in Galwan River Valley, Hot Springs and Pangong So Lake area in Ladakh. But the Modi government has yet to address the nation on this extremely pressing issue. India has never in the past compromised with our national security and territorial integrity. And if the reports of killing of our brave officer and soldiers by the Chinese are indeed true, then Prime Minister and Raksha Mantri must come forward and answer. First, is it true that Chinese have killed an officer and soldiers of Indian Army in the Galwan Valley? Is it true that Indian soldiers have also been critically injured? If so, why are PM Modi and Defence Minister maintaining absolute silence? Second, is it true that Indian Army officers and soldiers were killed on June 15th night as the de-escalation process was underway in the Galwan Valley? Third, if our soldiers were killed on June 15th, why was the statement issued today at 12:52 pm and why was the statement changed after 16 minutes at 1:08 pm? Fourth, why is the PM and Defence silent on Chinese intrusion into India? Fifth, how much Indian territory is being illegally occupied by China? Sixth, how does the government plan to tackle this situation and safeguard India's national security and territorial integrity?